Good morning all, am I audible? Yes, sir. Till carbohydrate I completed. Carbohydrates are tile. So let us go to protein. Any difficulty? Kichi problem achi? A porchanta? No, I think. No, sir. Okay. GS classes chalchi? No, sir. Now, कौन GS का कितनी कौन chalchi? So GS में history and polity चलଛି. History of polity chalchi. के नौचंती class? इसका दीपक सर नौचंदी सर. दीटा class. सारी नौचंती. नहीं polity सर नौचंदी. Sir, Soumya sir नौचंदी politics. Okay. ठीक है. How you find both the subject? History or polity, which is more interesting? Both. से तो ठीक अच्छी, but माने कोटे objective assessment पाई कोटे better लगुची. Polity. I expect polity. Okay, nice, good. ठीक है. So let us start. यहाँ your time माने पर्तन तो समय अच्छी, तो read accordingly. See, you should keep right now the mode of preparation should be it should not be focused towards prelim or mains. Okay, it should be generalized study, right? जेतोड़ा आपण गोटे chapter wise complete कर दो जल्दी, be it your history, polity or home science or anything. Okay, whatever subject you are studying, my sincere advice is that see the difference between the first like when you are preparing and by end of this process you should not be telling like I am the first timer. Okay, the key to that is कौन करि परिबे आपण when you are completing one chapter then do a R&D regarding the previous year questions. Okay, especially the last year question and with reference to like even the older questions also. Okay, but I'm not telling you do R&D for 10 years of question, at least for the 3 years or 5 years of questions you do. देखो तुझे से पर्टिकुलर चैप्टर को क्वेश्चंस आछे, राइट? जो क्वेश्चंस आसीची, if I'm not asking you to write all these previous year questions from that topic which is already covered, it's not like that. Just see the how the questions are being framed. Okay, and whether with the existing knowledge you are able to address that question, right? I am not asking you कि हाँ सही समय रे सब जिंस तो आपण दिमाग रे नथिबो डायरेक्टली आपण करिपे, but just try to have a objective assessment कि हाँ जदी सपोज जो जिंस आपण पढिले से जिंस आपण जे मन रे रखि थांते, then whether you will be able to answer all such questions or what. Okay, कौन हबो जदी एमती करिवे देखिबे end of the syllabus आपनकर क्वेश्चन गुडा हे जो, but still 10% questions would be left out. And you will find that 10% questions are not addressed anywhere in the syllabus itself. Okay, so saida kemti heichi, those 10% questions are completely applied questions. Okay, analytical questions. It is derived from that studied syllabus only, but it was not framed directly. Okay, so this is what I am asking you to do. And if you are doing this, then what is, see, जो जिनसा हमें जतबे I don't know how many of you from the
like any engineering or medical or some other, even the science background or something, generally what we used to do, ame kichi jinsa theory podhu tar gote practical session हुए, right? Then practical ta kon हुए कि जो जिनसा आपण पढुछन तार practical applicability टा देखुछन, so that you will be able to better correlate your text and everything whatever you are studying. The same thing is in terms of the preparation. Whatever you are studying, that is theory, right? Unless and until that is being correlated, or you can say that is like incorporated in the question itself, that practical or the, you can say, relatability is still missing out, right? So that's why you should look for the questions, be it your prelim questions or main questions, so that you can better address what type of questions is framed in the examination. Okay, what will happen, why I am asking this you to do, because by the like in this process, if you'll proceed by the after 3 or 4 such like chapter you have done such processes, then जेतबेले next chapters आपण पढिबे ना, सेतबेले whenever you are reading some text, the something will come to your mind, okay, how to read and what to read. So from this particular thing, a question can be framed. So that type of thought, or that type of, you can say, imaginations, or the our projections should come to our mind. So that is the underlying objective what I am suggesting to you right now. Okay, so do accordingly. You have ample amount of time. If you are utilizing this whole process in a very, you can say, timely manner, or very, you can say, organized manner, then the process will be quite simple and easy. What generally we used to do in the orthodox manner of preparations, now we'll leave everything, just whatever it is being taught in the classes, we'll just mug it out, and what will happen, that will be a temporary memory, and you will forget it after 5 or 7 you can say classes. So whatever you have studied, that is of no use, like unless until you apply this to the previous year questions. Okay, in that way you will also remember, you'll also find you'll be able to remember, because बुझी जानते गोटे जिंस कि जहा टेक्स्ट बर्तन पढ़ा होची आपनको, the every single bit, if you try to reproduce in your examination, this is not going to happen. Okay, as far as mains are concerned, because prelim में तो आपनको MCQ करिया को पड़िबा. So that's why something, a broader idea and the question, that is what required, and how you represent, and the representations, the skill of writing, the you can say the how you can put your answers in a better, you can say, attractive way, and all those things, that will come to you in a in a timely manner, that will come in a gradual manner. Okay, you should not bother about those things quite a lot at this particular point of time. Okay, I guess I am clear what message I want to I want to give it to you. Okay, don't stress whenever I am saying something. किछि भी मु जोटे जिंसो कहूची, I want preparation to be as simple as it should be within your ease limit. Okay, you should not make everything quite you can say like heavy and rocket science kind of thing. Okay, which question? हाँ, कौन तो ललित कौन कहूतले? सर कंटिन्यू 3-4 दिन 5 दिन पढ़ देला परे 6 दिन को माने सेही येटा रहउनी, सेटा केमती कोन टैकल करिया दिए कोन सैचुरेशन ना झील रहउनी, हाँ माने एनर्जी लेवल गोटे प्रकार बहुत हेवी ही जाउची. ओके, हाँ सुनो तो फास्ट गोटे जिंस कहूची, एटा बहुत कॉमन सा जिंस, आई डोंट नो, आई एम वेस्टिंग योर टाइम, आई विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम, हार्डली 2 मिनिट्स से वाइंड अप करिबी. ओके, सी फर्स्ट जिंस, दिस इज इफ यू आर थिंकिंग दिस इज यूनिक टू यू, नो, दिस इज कॉमन टू एवरीवन. जे भी टॉप होबा तार भी एटा ए थॉट्स और ए पर्टिकुलर माइंडसेट और मूड स्विंग्स वे, दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन. सी फर्स्ट जिंस, ड्यू जेतबेले आपनको से जो प्रिपरेशन रो एनर्जी लेवल को नेक कोनोसी प्रकार डाउट होची ना, टेक सम टाइम, डोंट माने आउट रे से स्टडीज को जंप करंतु नी हरीड वे रे, टेक सम टाइम एंड आस्क योर इनर सेल्फ कि ए पर्टिकुलर, सी फॉर लाइवलीहुड देयर आर n number of job you can opt for, and this is not a very, you can say, ease type of job also. There are a lot of workload, there are a lot of expectations out of this job. Till then you decided to prepare for this. Okay, be it your OS, be it your IAS or whatever. Okay, any civil service I am asking. See, तो निजो को पास पहुंचना तो why you have chosen this job. If it is under the influence of the society or the parent, then you may not be the right candidate for this. No, I am not discouraging anyone. I am telling you why you, because you should internalize. आप जितने पर्यंत internalize न करिबे कि से जिंसटा को like एटा, this is my piece of thing, I will do it for you, I'll do it for myself. जदि ए जिंसटा आसुची ना,
देन फर्स्ट जिंस ए जो एवरी मॉर्निंग रो से जो डायलेमा थाए ना कि हां वेदर काहे कि मु पढुची अरे हबो कि हबोनी मो सांग माने सेटल हे गलेनी मु एठी अछि दिस थिंग एंड दैट विल नॉट कम टू योर माइंड इफ यू इंटरनलाइज समथिंग सेकेंड जिंस होची निजरो एबिलिटी ऊपर फेथ ओके निजो एबिलिटी ऊपर फेथ रो अर्थ कोन केबे भी ना आउ कहा सहित मैच करने चेष्टा करते प्रथम कथा द्वितीय कथा टॉपर्स को मु देखिबी और टॉपर्स को मु फॉलो करिबी जे ऑलरेडी रैंक आनी ताकू मु फॉलो करिबी मो सांग गोटे जिंस कोची मु ताकू फॉलो करिबी बिल्कुल करिया दरकार नै निजरो जो भी यूनिक एबिलिटीज अछि दैट इज सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन ओके ए एग्जामिनेशन बाय एनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करिया पे गोटे बेसिक स्किल दरकार जोटा मु भाबुची क्लास इज अबाउट व्हिच टॉपिक होम साइंस रो ही क्लास चलची जस्ट 2 मिनिट्स के पचार ले तो कौन स्ट्रेटेजी रहा दरकार से कहूँ जस्ट विल बी स्टार्टिंग इन 2 मिनिट्स ओके से गोटे जिंस तापरे निजे जो जिंस आपण करूचंती निज नोट्स निजर राइटिंग स्किल्स निजर जो इंग्लिश जति आपण लिखि पारुचंती बहु जण कहिबे नाही ठीक अछि आपण बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखिया पड़िबो बहुत माने यू कैन से जो शशि थरूर काइंड ऑफ लाइब्रेरीज आपण को दरकार सो दैट यू कैन बी एबल टू क्लियर दिस जॉब नो ठीक अछि किछ दरकार नै बहुत सिंपल बेसिक जिंस so that आपण सेही आंसर लिखियो जोटा सामना वाला आपण पढी के बुझी परियो कोन आपण लिखिछन दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन ओके आउ गोटे सब बड़ जिंस होउची मु जेमती कहिली कि आमे कोन करू गोटे पर्टिकुलर एबे देखो आपण पाहे टाइम अधिक अछि बिकॉज एबे ना प्रीलिम डेट नोटिफाई हेची ना मेंस रो डेट नोटिफाई हेची ना एबे मेंस रो टेस्ट सीरीज चलियो किछि नै मजे मजे प्रीलिम रो टेस्ट सीरीज रोल आउट हबो से जिंस आपण केवल देखिबे तो कौन हुए कि आमे निजर पढ़ा को ना ऑर्गेनाइज करूना वर्तमान आमे केवल गोटे आडू पढ़ी चलू see reading is equally important I am not saying कि आपण गोटे थर दी थर न पढिले आपण को बुझा पड़िबनी कंप्लीटली जिंस गुडा बट पढंतु ता सहित तार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को भी बहुत माने डिफाइन करंतु केमती करिवे जेमती मु कहली PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQs सेही टाइप रो जिंस जो आपण प्रीलिम रो हो बा मेंस रो हो ताकू जते बेले कोरिलेट करिवे विथ द चैप्टर्स दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड आ गोटे कथा जते बेले इनिशियली आपण करि बसिबे गोटे हिंड्रेंस कोन आसे आम मन सब मु कहे जे तू एबे पर्यंत पढ़ी तो देछु किछि तो मन रे नाही अरे मु किछि जाननी तो मु केमती उठेबी सेटा होची सब बेले गोटे डिमोरलाइज आपण डिमोरलाइज करे से जिंस को नाही ऑप्ट करबी नि एबे क्वेश्चन परे देखि देबी आउ टिके पढी की देखि देबी से दिन केबे आसीबो नाही whatever you know just a brief of sketch idea तो अच्छी मन रे ना बस काली हमें पढ़िथिले कार्बोहाइड्रेट विषय तो कार्बोहाइड्रेट ऊपर तो रखिछन्ती आपण एमती नै जे सब भूली गले आपण मन नथिबो टर्मिनोलॉजीज मन नथिबो से कार्बोहाइड्रेट टाइप्स गुडाको बट क्वेश्चन देखिले तो जा पड़े हां ठीक अछि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पचारची बा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पचारची फाइंड इट इन नोट पीडीएफ तुम कहितली अपलोड करिया पे आज गदे मेल सेति पे मागुछन मे बी योर एक्सेस विल बी गिवन फॉर दैट ओके डोंट वरी दैट विल बी एंश्योर ओके जस्ट स्टार्टिंग क्लासेस अछि ना कोटे दिन टिके आपण प्रॉब्लम ही पारे बट rest assured that will be sorted out okay and I am also equally concerned कि आपण को जल्दी materials available हो PDF I won't be sharing in the you can say in the group itself just because कि आपण को PDF जति दिए प्रॉब्लम होची माने आपण से तो प्रॉब्लम होबो अन्य मानव से प्रॉब्लम होबो that is circulating everywhere in the open market okay this for your good you won't understand right now but whatever I am planning is with my experience okay ठीक अछि with that let us start obviously time waste कले आपण एग्जिट करिया स्टार्ट करबे what is an protein weekly answer writing things yes we'll do the weekly answer writing things let us first start with let us complete at least one topic then I'll be giving you the mains answer writing type of things with a very simple things with a very basic previous type of questions I'll be giving you just write it honestly you write if not you are able to memorize everything at least a topic को पढ़ंतु फोन करंतु खाता और जहां मन क्वेश्चन ताकू लिखंतु I'll appreciate those type of answer writing okay and one more thing from my side जेमति मु प्रथम क्लास रो ही कहितली answer writing मु दोछि तो आपण लिखिबे this is some expectations I have from you guys okay correction maybe mo election करिया पर्यंत maybe mo टिके कम टाइम अछि मो इलेक्शन नै जनरल इलेक्शन करिया पर्यंत टिके कम टाइम अछि जदी कोनोसी कारण रु खाता एना मु चेक न करि परिबा आंसर राइटिंग रो डोंट वरी एंड डोंट पैनिक एंड स्टार्ट putting a lot of pressure on yourself rest assured your papers your questions answers will be evaluated okay let us start ठीक अछि हमें कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करथि let us come to the second most important thing that is the protein कोन हबो प्रोटीन कोन प्रोटीन इज फर्स्ट थिंग हमें जानि छु प्रोटीन को हमें कहूछु बिल्डिंग ब्लॉक पुष्टि सार जानि छु
देहरे जो आमे मसल बिल्डिंग करूचे बा कोनोसी ऑर्गन बिल्डिंग होची हाइट पडुची हम ग्रोथ होची am weight बढ़ुची weight obviously not only for the protein fat also contribute on that but in a healthy way of you can say our body growth say tissue हो organ हो cells हो तो तार कौन से प्रकार structural improvement पाई okay you need your protein ठीक अछि प्रोटीन रो बेसिक काम होउची हमर बॉडी बिल्डिंग पाई ओके जेमते हमें पढितिले एनर्जी रो दवा पाई बेसिक रिक्वायरमेंट थिला बेसिक न्यूट्रिएंट थिला से होची कार्बोहाइड्रेट अदर देन दैट हमें इडा भी पढितिले कि हां ठीक अछि फैट भी एनर्जी दबो इवन प्रोटीन भी एनर्जी दबो बट प्रोटीन रो मेन काम एनर्जी दबन हो ता मेन काम होउची हमें ताको बॉडी बिल्डिंग रे हेल्प करिवो बॉडी बिल्डिंग रे केतेबेल हेल्प करिवो गतकाली हमें फंक्शंस रे गोटे इंसो पढितिले कार्बोहाइड्रेट रो कि कार्बोहाइड्रेट को जदी हमें सेव सॉरी कार्बोहाइड्रेट जदी हमें एडिक्वेट क्वांटिटी रे खाइबा देन ओनली प्रोटीन ताको एनर्जी रे यूटिलाइज न करिके ताको बॉडी बिल्डिंग रे यूज करा हबो ओके ताको हमें कोन कहउतुलो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ओके सेटा भी हमें पढितिले फंक्शन ऑफ द फंक्शनलिटी ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट ठीक अछि तो प्रोटीन हम देहर कोठी मिलुछि यू जस्ट इमेजिन द ऑर्गन यू विल फाइंड द प्रोटीन ओवर जेमति देखो प्रोटीन इज वेरी मच कॉमन इन योर इट इज फाउंड इन योर स्किन इट इज इन योर हेयर इन योर नेल मसल रे मिले स्केलेटन रे मिले बॉडी सेल्स रे मिले एंड बॉडी फ्लूइड रे मिले ओके अदर देन दिस इज देयर एनीथिंग लेफ्ट आउट इन आवर बॉडी फ्लूइड यू विल फाइंड एवरीवेयर बिना सेल रे तो बॉडी रो कोनोसी ऑर्गन माने थियरी है ही नहीं ठीक अछि स्केलेटन इज द बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल जो फाउंडेशनल मटेरियल्स कथा कहउचे मसल्स आर देयर हेयर नेल स्किन एवरीथिंग यू कैन फाइंड प्रोटीन इज देयर प्रोटीन केमती तयारी हेची प्रोटीन काली भी डिस्कस करते प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द एमिनो एसिड चेन्स ऑफ एमिनो एसिड जतबेले गोटे कंबाइन होंती देन फाइनली वन प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी यू कैन से it will be formed okay see protein is different protein is very much unique compared to the carbohydrate and fat kahi ki जदि कार्बोहाइड्रेट और फैट को आपण तार जदि मॉलिक्यूलर स्केल्स जदि देखिबे ताको जदि इफ यू गोइंग टू जदि हमें एटम्स लेवल रे ताको जदि बाइफरकेट करिबा देन व्हाट विल फाइंड यू विल फाइंड द कार्बन यू विल फाइंड द ऑक्सीजन यू विल फाइंड द हाइड्रोजन ए सब कंपोनेंट आपन को ए सब आपन को यू कैन से एलिमेंट्स यू विल फाइंड इन द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट किंतु जो नाइट्रोजन कंपोनेंट रहिला दैट इज ओनली फाउंड इन द प्रोटीन सो दैट्स व्हाई जतोल बॉडी रे कोनोसी जगार नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट अछि दैट मींस प्रोटीन इज रिक्वायर्ड ओके जदि हमें प्रोटीन को ठीक भाबरे जदि कंज्यूम न करूछु डेफिशिएंसी होची दैट मींस नाइट्रोजन रो डेफिशिएंसी मध्ये बॉडी रे देखा जिवो ओके यू कैन सी सो देयर आर सॉरी दे इंक्लूड्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन makes it different protein is different from the carbohydrate and the fat carbohydrate और fat to ताको अलगा करूची जेमति ए जिंस भी काली डिस्कस करथले देयर आर 20 नंबर ऑफ द एमिनो एसिड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए ह्यूमन 20 टा हमको एमिनो एसिड दरकार आउट ऑफ दोस 20 एमिनो एसिड देयर आर एसेंशियल एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एसेंशियल एमिनो एसिड केतरा 9 टा होची एसेंशियल एमिनो एसिड आ 11 टा होची नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड तो बॉडी भितरे सिंथेसाइज हे जिवो काली हमें कार्बोहाइड्रेट रो जतबे फंक्शंस देखुले ततबे डिस्कस करथिले कि कार्बोहाइड्रेट इवन हेल्प करूची नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड रो माने तयारी करिवारे ओके मैन्युफैक्चरिंग हबारे सिंथेसिस हबारे बॉडी भितरे हे जाय किंतु एसेंशियल एमिनो एसिड ओनली टू बी सप्लाइड बाय द डेली फूड ओके सेटा हमें इंटरनली बॉडी भितरे सिंथेसाइज हे परिबो नाही there are 9 number of essential amino acids there are names are there if you want to remember you can remember otherwise you remember 2-3 important names that is sufficient in the histidine hela isoleucine hela leucine hela lysine hela methionine hela so these are some of the important you can say essential amino acid lysine and methionine this is important at least ei data to mon rakhibe because jeto ame just after this also we'll be discussing गोटे ए भितर कंपोनेंट आपन कार्बोहाइड्रेट अधिक रहइबो गोटे कंपोनेंट आपनकर पल्सेस रे अधिक रहइबो सो दैट जदी ओनली पल्स हमें कंज्यूम करछु बा ओनली हमें सीरियल्स कंज्यूम करछु देन हमरो प्रोटीन रो डेफिशिएंसी आसीबो एसेंशियल एमिनो एसिड रो डेफिशिएंसी आसीबो तो हमको दीटा को कंज्यूम करी कि ताको कंपनसेट करिया को पड़िबो ओके सिमिलरली माने नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड रो मध्ये alanine अछि eclanine अछि तो लाइक दैट द नेम्स आर देयर ऑल द 11 नेम्स आर देयर बट आउट ऑफ ऑल द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड केवल देखंतु एग्रेनाइन जो रहिछि दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट
डिस्पाइट इट इज ए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड तथापि एटा इंपोर्टेंट कोन पई ग्रोइंग चिल्ड्रंस को पई इवन जो पेशेंट जो माने सर्जरी बा इंजरी रु रिकवरी करछुती से मानको पई दिस इज इंपोर्टेंट ओके सो बेस्ड ऑन दिस आमे जदी क्लासिफिकेशन एटा हमरो ब्रीफ ओवरव्यू गला प्रोटीन रो कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन को हमें केमती क्लासिफाई करछु बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द एमिनो एसिड कितने परिमाण रो एमिनो एसिड से पर्टिकुलर प्रोटीन रो लाइक मॉलिक्यूल रे अछि तो हमें देखिया जदी प्रोटीन को थ्री टाइप्स में डिवाइड करछु वन इज कंप्लीट प्रोटीन अनदर इज पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन एंड अनदर इज द इनकंप्लीट प्रोटीन ठीक अछि तो कंप्लीट प्रोटीन केते बळे कहिबा कंप्लीट प्रोटीन को आमे फर्स्ट क्लास प्रोटीन मध्ये कहूछु अदरवाइज हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन मध्ये कहूछु दिस थ्री नेम्स आर द सिमिलर इफ एट ऑल क्वेश्चंस आपन को हाई क्लास प्रोटीन ऊपर आस जाई छी देन some note writing or something about high class protein don't confuse it is a complete protein okay complete protein रो अर्थ कोन ता अर्थ जो 9 essential amino acid कथा कहली ए नॉट आको essential amino acid adequate quantity रे adequate sufficient quantity रे सेही पर्टिकुलर प्रोटीन फूड रे अवेलेबल अछि जदि एमिति किछि फूड हमें कंज्यूम करूछु फर से मिल्क किबा एग से एग कंज्यूम करिया फल रे नॉट आको एसेंशियल एमिनो एसिड सफिशिएंट एडिक्वेट क्वांटिटी रे हमको मिल जिवो देन इट इज कॉल्ड द कंप्लीट प्रोटीन नेक्स्ट कंप्लीट प्रोटीन फॉर एग्जांपल मिल्क एंड द एग पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन व्हाट इज पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन जो जगह रे नॉट देखो कंफ्यूज हेबेनी पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन रे मध्ये नॉट आको एमिनो एसिड रहिबो बट द प्रोपोर्शन ऑफ द एमिनो एसिड इज नॉट एडिक्वेट फॉर से जो भी सपोज आपे मेथियोनिन कथा कहिबा मेथियोनिन गोटे एसेंशियल एमिनो एसिड जोटा सपोज भावंतु 50 यूनिट्स रिक्वायर्ड होची डेली बेसिस रे एग्जांपल 50 यूनिट दरकार होची डेली बेसिस रे बट आपण पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन को कंज्यूम कले ओके कि आपण कोन हला कि सही माने जो 50 यूनिट मेथियोनिन दरकार था ता जगह रे आपण को 30 यूनिट्स मिलला तो यू आर गेटिंग द मेथियोनिन but you are not getting into the adequate quantity okay so that is written over here it lacks sufficient amount okay some of the essential amino acid lacks in the sufficient amount okay जेमती एग्जांपल्स देखंतु जेमती कोनोसी प्रकार प्लांट डाइट हला जेमती कि दाल हला सीरियल हला जोटा को प्लांट्स रो हम पाउछु एगुडा को सब बेले पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन थाए पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन थाए सी तोळे प्रोटीन कथा कहउछु ना द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन इज ऑलवेज द एग बट व्हाट अबाउट द वेजिटेरियन जो माने डाइट करती तो से मानको को सब बेले एटा एडवाइजेबल थाए कि यू शुड कंज्यूम एटलीस्ट मिल्क because milk is something if you're not consuming in the longer goal what will happen you will encounter some kind of deficiency in terms of your essential amino acid I guess I'm clear with everyone next incomplete protein ha incomplete protein hame ketebale kohuchu incomplete protein a case re gotte at least gotte pa more than one essential amino acid जो not a essential amino acid थिला that is not present it is completely absent the not a जो essential amino acid रो at least गोटे amino acid से भीतर नथिबो then only it is called the incomplete protein जेमति कि हमें देखुचे गोटे कॉर्न हला जो हमें मक्का कथा कहूचे मक्का को जति हमें कंप्लीटली ताकू जति हमें नॉर्मल डाइट रे रिप्लेस कर दोछु देयर आर सर्टेन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जो रील्स ये आउट डाइटिशियंस वगैरह बेले बेले किछि जगह रे कोन बे किछि लोक निजो नॉर्मल डाइट को रिप्लेस करिके कॉर्न मिल को शिफ्ट जानती ठीक अछि तो सेटा आपनकर जो कोन कहउछन्ती वेट लॉस करिया पई बा XYZ रीजंस पई तो सही केस रे लॉन्गर टर्म रे जति कॉर्न को कंटीन्यूअसली आपण कंज्यूम करछथि विदाउट कंज्यूमिंग अदर प्रोटीन देन व्हाट विल हैपन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग सम काइंड ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस ओके सो दिस इज हाउ इट इज गोस तो तीन प्रकार हमर क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स को हम देखिले नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन फंक्शन प्रोटीन कोन बेसिक जिंस हम ऑलरेडी डिस्कस करछे मेनी ए टाइम इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स नेक्स्ट होची प्रोटीन आयरन सहित मिसिकी हीमोग्लोबिन तयारी करे जोटा कि हमें जानिछु हीमोग्लोबिन इज रिक्वायर्ड टू कैरी द ऑक्सीजन ब्लड रे ऑक्सीजन को कैरी करिवारे हीमोग्लोबिन दरकार हमर बॉडी रे जत्ते भी सेल ऑर्गेनेल्स अछि जत्ते भी ऑर्गेनेल्स अछि सब ऑर्गन्स को कोन दरकार ऑक्सीजन दरकार आ ऑक्सीजन ता तो हमें इनहेल करूछु ता इनहेल करला परे से पहुंचीबो केमती यू नो अबाउट द बेसिक बायोलॉजी थिंग इट गोस टू योर हार्ट
हार्ट रे जिता परे हार्ट रो से कोन होउची इट इज पम्प्ड आउट थ्रू द ब्लड रे मिक्स हुए ब्लड रे मिक्स हला परे आर्टरी सहित से दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो इंटरनल ऑर्गन्स पाखो से ब्लड पहुंचे से ब्लड टा जोटा ऑक्सीजन रे रिच थाए से ऑक्सीजन को इंटरनल ऑर्गन्स गुडा को एब्जॉर्ब करते ठीक अछि सिंपल सा जिंस तो ए केवल ब्लड इज नॉट कैपेबल ऑफ कैरिंग द ऑक्सीजन ब्लड भितरे जो कंपोनेंट अछि हीमोग्लोबिन दैट इज you can say essential or that is responsible for carrying the hemoglobin sorry oxygen to the cell organelles right एटा होची गोटे इंपोर्टेंट काम जेतोले प्रोटीन आयरन सहित मिसछि सेतोले से हीमोग्लोबिन तयारी करछि ओके नेक्स्ट किछि प्लाज्मा प्रोटीन्स अछंती जेमति कि ग्लोब्युलिन हला एल्ब्यूमिन हला ए जो ना गुडा कोछि दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन ए प्लाज्मा प्रोटीन तोर काम कोन ए प्लाज्मा प्रोटीन बी प्रोटीन रु ही तयारी हिछि मानको काम कोन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करियो ऑस्मोटिक प्रेशर रो अर्थ कोन बॉडी रे जेतोले आपन को स्वेटिंग होउची काहे कि स्वेटिंग होउची खरा रे गले बिकॉज़ द बॉडी रो टेंपरेचर किते मेंटेन होवा दरकार वी हैव ए नॉमिनल टेंपरेचर कि हमें जो कोचो 98 केते है 98.4 98.6 डिग्री जोटा फारेनहाइट तो सेटा होउची हमरो एडिक्वेट टेंपरेचर ताकू सेटा होउची हमें ऑप्टिमम टेंपरेचर किंतु हमें हटात हमें सन को एक्सपोज हे गले माने हीट को then what will happen the external temperature is more and the body temperature is less again the simple physics upon logan to kon hobo gradient difference hobo 37 degree but in terms of degree centigrade you are telling ठीक अछि तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रो जति हम बाहर टेंपरेचर बर्तन हां 98.4 फारेनहाइट ठीक अछि तो जदि बाहर टेंपरेचर अधिक होउची देन व्हाट विल हैपन हमरो ऑस्मोटिक प्रेशर रो मेंटेनेंस हुए सेही समय रे कोन हुए बॉडी रे किछि वाटर स्वेट फॉर्म रे हमरो जो माने स्वेट ग्लैंड्स अछंती अंडर द स्किन so that they are going to release okay तो आ फल रे कोन हबो कि गोटे माने हमर जो स्वेटिंग हमें करूछु आ बॉडी रो टेंपरेचर सेही केस रे मेंटेन हुए ओके ए ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर बैलेंस बॉडी रे केते रहिबो सेटा obviously के तो गोटे रेगुलेट करूथबो तो प्लाज्मा प्रोटीन्स टू ऑफ द मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक ग्लोब्युलिन एंड एल्ब्यूमिन these are responsible for the controlling the like osmotic pressure of our body how a plasma proteins kemti tiyari honti the name itself is suggesting it is a protein component okay next protein kon koruchi it supplies raw material to the body for the synthesis of certain enzymes jemti ame kali dekhuthile digestion process re kichi enzymes release hotula se tyrine ho ba apanଙ୍କର जो भी amylase हो pancreatic amylase हो maltase पढिथिले lactase पढिथिले तो सब केमती तयारी होची तो एंजाइम्स सर्टेन एंजाइम्स आल्सो सिंथेसाइज विथ द हेल्प ऑफ द प्रोटीन इटसेल्फ नेक्स्ट किछि हार्मोन इंपोर्टेंट हार्मोन जेमति कि हमें देखु जे इंसुलिन गोटे हार्मोन हैला तो ये हार्मोन रो प्रोडक्शंस केमती होबो तयारी केमती होबो बाय द प्रोसेस ऑफ योर प्रोटीन थ्रू रे ही सेही हार्मोन्स गुडा को तयारी हुए नेक्स्ट हमें मु एटा भी कहिछि जदी हम देहरे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहिबो नाही देन व्हाट विल हैपन माने ए प्रोटीन गुडा को यूज होबो एनर्जी प्रोडक्शन करि पारे ओके जेमति कि गोटे इफ यू सी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को जदी माने कंप्लीटली तार हाइड्रोलिसिस होउची जदी दैट एनर्जी बाहर करछु देन 5.56 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड ओके obviously this is more than the carbohydrate energy but this is not the purpose of the protein inside our body energy provide kरिया purpose नो rather body building kरिया होची protein रो काम okay next acid and not that important ha muscle ro contraction simple जिनटा मन रखंतु muscle रो contraction जो होची muscle contract होची आपण निजे कोनो से एक्टिविटी करछोनी बसछंती उठछंती सोउछंती so everything in every action the muscle contraction is very much important even आपण जो heart pumping होची that is also one kind of muscle contraction okay involuntary obviously but this is also muscle contraction तो ए muscle को contract करिया पई मध्य you need your protein okay protein is helpful for that it is required not only helpful ठीक अछि sources this is all about your functions of the protein very much important जोटा का आपनकर carbohydrate or functions हो का protein रो functions हो you have to remember the functions next coming to the sources already हमें देखि जे milk हला meat हला fish poultry egg जे कोनसी प्रकार animal protein देखुजन these are very much these are very good source of your protein जोटा का हमें complete protein कहूजो because all the 9 essential amino acids are found over here coming to plant माने हमें जदि plant sources रो protein को देखियो जेमति pulses कथा देखिले cereals कथा देखिले
एगुडा को आमे obviously protein थाए but proteins are not adequate, incomplete protein थाए से माने partially incomplete protein था से माने partially complete sorry जेमती pulses को देखंतु pulses को कोन कोन it is a plant protein pulses को आमे को poor man's meat because सस्ता रे मिले से जिंसटा को पीडीएस रे भी आमे दाल को सप्लाई करछु but we are not supplying the meat fish or any other animal protein जनरली कोन हुए कि केवल जदि आपण दाल को कंज्यूम करिवे इन प्लेस ऑफ योर normal protein, then what will happen? You will start encountering some kind of protein deficiency. ताकू हमें address करिया पे what we have to do? We have to mutually supplement करिया को पड़िबो दाल with the cereals. Example देखंतु गोटे लाइसिन मु कहितली there is a lysine गोटे थिला methionine गोटे थिला दीटा को होची essential amino acid रो ना out of the 9 essential amino acid lysine is an essential amino acid जोटा कि सीरियल्स रे कम थाए सीरियल्स रे चावल रे भात रे माने चावल हो किबा आपण गहम हो एठी आपण को कम थाए बट लाइसिन इज एब्युंडेंट अधिक थाए कोठी पल्सेस रे डाली जातीय जिंस रे अधिक थाए सो पल्स जदि हमें जदि पल्सेस डाली जातीय जिंस देखिबा देन मेथियोनाइन कम थाए बट राइस रे से मेथियोनाइन अधिक थाए सो देयर आर टू एसेंशियल एमिनो एसिड कथा मैं कहूछु लाइसिन एंड मेथियोनाइन लाइसिन ता डाली रे कम थाए सॉरी राइस रे कम थाए बट डाली रे अधिक थाए मेथियोनाइन कथा जे देखिबा एटा पल्सेस रे डाली रे कम थाए बट राइस रे अधिक थाए व्हाट विल हैपन इफ यू आर कंज्यूमिंग बोथ आमे जनरली कोन कहूछु भात सहित डाली खाउछु मे बी हम भाउथली टेस्ट पय खाउछु बट नो इन द एंशिएंट डेज इटसेल्फ पीपल हैज done their R&D in their own scientific manner but finally they concluded rice should be eaten with the dal okay we made it as a custom but whatever it may be because of their you can say wit we are still alive without deficiency of our protein okay so this particular action is called when you are consuming rice with some pulses kind of thing then it is called the supplementing of deficiency of each other okay jone au jononkor deficiency को supplement करके overall गोटे balance को maintain करछन्ती okay this is some example if you if at all it is required you can quote this type of examples too ठीक अछि बर्तन coming to the deficiency जदि एठी अपन कहबे जे ना हमें कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी देखिनु बिकॉज़ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी वी आर गोइंग टू डील इन ए सिंगल लाइक इन ए सिंगल टॉपिक इटसेल्फ बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट रो डेफिशिएंसी एज सच किछि इंपोर्टेंट नाही किबा आपनकर प्रोटीन रो ओनली प्रोटीन रो डेफिशिएंसी रे एज सच किछि नाही दीटा को कंबाइंड डेफिशिएंसी रे किछि डिजीज कंडीशंस अकर हुए जोटा कि एथरो एग्जामिनेशंस रे भी आछि बट द क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड नॉट लाइक दिस सम अदर वे ओके जो जिनस बर्तन आमे पढिबा क्लियर यू शुड हैव ए क्लियर माइंडसेट कि ए क्वेश्चन रो इंपोर्टेंस आपन को माल न्यूट्रिशन रे मते आसीबो आउ ए टॉपिक रे मते आसीबो ठीक अछि तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एनी माने फ्रॉम एनी टॉपिक दैट इज इमैटेरियल बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एवरीथिंग एंड इफ एट ऑल क्वेश्चन इज आस्किंग if it is appearing in the examination you will be able to address it okay so coming to this the lack of the above two जो भी आमे दीटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कथा पढिले जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कथा ए दि जनकर जदि आमे दीटा को जो कंपोनेंट देखिले आमे ए दीटा जदि कंबाइन डेफिशिएंसी हुए देन किछि डिजीज कंडीशंस आमे देखो से पर्टिकुलर डेफिशिएंसी को आमे कोन कहूछु पीईएम कहूछु जोटा आमे कहू प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन आई थिंक मो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आपन को देखौथिली ए थर रो जो क्वेश्चंस ए टॉपिक पे मु देखैछि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ऊपर से पचारछि ओके तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन रो अर्थ कोन ता जोको को डिजीज देखा जाय बिकॉज़ ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन यू कैन एनकाउंटर क्वेश्चन और यू कैन एनकाउंटर मैरास्मस अदरवाइज आ गोटे भी कंडीशंस अछि ताको हमें कहू मारास्मेटिक क्वेश्चन सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ठीक अछि तो लेट अस सी तो क्वेश्चन कराओ मारास्मस ई दीटा को जति ई दीटा को मेजर जिंस कोन माने डिटेक्टेबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ बोथ द डिजीज कंडीशंस इज द ग्रोथ रिटार्डेशन ग्रोथ जो होची नॉर्मल ग्रोथ होबा कथा नॉर्मल ग्रोथ होबो नाही ग्रोथ ता रिटार्ड ही जीवो ग्रोथ ता इनहिबिट ही जीवो रेस्ट्रिक्ट ही जीवो ओके बोथ द केस ऑफ द क्वेश्चन एंड मारास्मस ओके तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड मारास्मस फर्स्ट ठीक अछि तो I'll make you the things simple. ATAT Pitur ko jiba darkar nahi. Just whatever I am asking you to write right now. जोटा मु कहिबी टिके लेखंतु. It will be easy for you. First is the marasmus. Okay. लेखुचन समझते.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, देखो हमें कौन कहले प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. Okay. And one more thing, don't go by the kwashiorkor and marasmus, but it's given over here. Whatever I am asking you to write, just write that, remember that, magab, and it will be easy for you to remember also. Okay. Coming to marasmus. Marasmus, केतेबेले भी देखो हम बाहर दीटा जिंस रहला गोटे प्रोटीन आ गोटे होची कार्बोहाइड्रेट दीटा कर डेफिशिएंसी ही पारे अदरवाइज गोटे गोटे रो भी डेफिशिएंसी ही पारे तो बेस्ड ऑन द वेरिड कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी दीटा को डिजीज कंडीशन अपीयर हबो ठीक अछि मारास्मस लेखंतु मारास्मस रे कोन हबो प्रोटीन रो भी डेफिशिएंसी हबो आ एनर्जी रो भी डेफिशिएंसी हबो एनर्जी इज सिनोनिमस टू योर कार्बोहाइड्रेट एवरीवन इज क्लियर विथ दिस एक ऐसे प्रोटीन रो डेफिशिएंसी हबो एंड एनर्जी रो भी डेफिशिएंसी हबो देन हमको जो डिजीज कंडीशंस देखा जिवो सेटा मारास्मस मारास्मस ता इन जनरली चिल्ड्रंस मानक पाखे देखा जाए इट इज आल्सो फाउंड इन द एडल्ट्स टू ओके कमिंग टू द आई थिंक लिखले समझते मेनली फाउंड इन द चिल्ड्रन ऑब्वियसली क्वाशियोर्कर भी चिल्ड्रंस पाखे ही देखा जिवो मारास्मस कथा हम देखिले तो मारास्मस रो गोटे मीनिंग अछि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मारास्मस इट मींस टू वेस्ट अवे WASTE वेस्ट अवे केमती वेस्ट अवे हबो कहि भी सको एटा जे सॉरी जो मु आपन को तीनटा टर्मिनोलॉजी विषय रे भी कहिबी गोटे होची वेस्टिंग स्टंटिंग एंड अंडरवेट से तीनटा भी बहुत इंपोर्टेंट राइट ओके राइट डाउन पता सब हेडिंग जंतु ता अंडर रे जोटा कि सिम्पटम्स जदि हमको मारास्मस के हमें मारास्मस केमती जाने ए सिम्पटम्स यदि देखा जाए देन हमें कहबा जे मारास्मस फर्स्ट इज सिमिलर माने जो सिम्पटम्स गुडा मु इनिशियली क्लब करी कहि दोची वेट लॉस हबो स्टंटेड ग्रोथ हबो बा स्टंटिंग हबो माने हाइट ता छोटो रहि जिवो स्किन ता ड्राई हबो ड्राई स्किन नेक्स्ट इज बिटर हेयर माने अपन चुट्टी जति जति फोल्ड करिवे भांगीबो चुट्टी के भांगेनी ना प्रोटीन मु कोन कहतली चुट्टी होगा योर हेयर योर नेल योर स्किन एंड एवरीथिंग इट इज मेड अप ऑफ योर प्रोटीन रो डेफिशिएंसी जोको ए टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी देखा जाउची इन योर हेयर सो दैट इज कॉल्ड द ब्रिटल हेयर राइट हां क्या डाउट ओके नेक्स्ट हाइपरटेंशन देखा जिवो स्लोर हार्ट रेट ता नॉर्मल रु कम रहिबो लो बॉडी टेम्परेचर रहिबो बॉडी टेम्परेचर ता नॉर्मल रु कम रहिबो लो बॉडी टेम्परेचर तापर देखा जिवो डायरिया कंडीशन इम्यूनिटी कम होबो लो इम्यूनिटी बहुत शीघ्र डिजीज कंडीशंस लिखा होतो दैट इज लो इम्यूनिटी एंड नेक्स्ट इज द एनीमिया एनीमिया रो अर्थ बुझिबे सब रक्तहीनता तो हीनता बेसिकली रक्त रे जति आरबीसी रो कंटेंट जति कम अछि ताकू एनीमिया में कहू ठीक अछि राइट जोटा भी अपन कहले ठीक ही अछि ओके तो आई थिंक एति की होची मारास्मस रो सबटो बेसिक जिंस कोन मारास्मेटिक कंडीशन एबे पर्तन हमें क्वाशियर कर देखिबा किछि जिंस ओवरलैपिंग हबो मारास्मस रो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होची नॉट फीचर कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम होची वेस्टिंग माने बॉडी वेस्टेड देखा जिवो ओके कमिंग टू क्वाशियर हेडिंग जो तो क्वाशियर जेमति मु कहली कि मारास्मस रे आपन को प्रोटीन और एनर्जी दीटा कर डेफिशिएंसी देखा होची किंतु मारास्मस रे सफिशिएंट कैलोरी मिल जाए एनर्जी टा माने कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट टा सफिशिएंट थाए किंतु इनसफिशिएंट प्रोटीन थाए
सर आउथरे कोन कहले टे कहलु क्वेश्चन रे सफिशिएंट कैलोरी तो थाए अपन को कंडीशन थाए किंतु प्रोटीन माने इनसफिशिएंट थाए बॉडी रे राइट तो फास्ट गोटे डिफरेंस जानले तीटा को केस सही केस रे कोन हेतला तीटा प्रोटीन और एनर्जी तीटा को अपन डेफिशिएंसी हेतला बट एई केस रे जेतल क्वेश्चन को देखुचे जेतल सफिशिएंट हमरो कैलोरी बा सफिशिएंट एनर्जी किंतु प्रोटीन इज डेफिशिएंट ओके से जेमता में मीनिंग लिखले तो मीनिंग कोन टू वेस्ट अवे माने बॉडी वेस्टेड ही जिबा तो एई केस रे हम कोन कहूछु आर मीनिंग जे देखिए क्वेश्चन को मीनिंग होची द सिकनेस द ओल्डर वन गेट्स व्हेन द न्यू बेबी इज बोर्न the sickness the older one gets when the new baby is born अर्थ बुझी पड़ते समझते जेतोले कोटे छुआ अछि तापर से छुआ बड़ हेनी आ गोटे छुआ हे गेला देन कोन हुए कि छोटो छुआ पई जो केयर करंती पेरेंट्स ऑब्वियसली माने पुअर बैकग्राउंड जो मानन को थाए तो बड़ छुआ टिके नेग्लेक्ट ही जाए जो नेग्लेक्ट हवा फल रे जो टाइप ऑफ डिजीज कंडीशंस जनरेट हुए देन ताको हमें क्वेश्चन को जनरली को बतन माने सिम्पटम्स रो हेडिंग दियंतु सिम्पटम्स ओके तो सिम्पटम्स रे कोन हबो फर्स्ट होची एडिमा EDMA EDEMA एडिमा एडिमा रो अर्थ कोन फ्लूइड जमा हे जो कोन से जगह बल्ज देखा जीवो बिकॉज़ सेठी फ्लूइड जमा ही जाय हम भाभी मोटा मोटा ही नै छी नेक्स्ट इरिटेबिलिटी इरिटेशन आसीबो बहुत माने कम समय होते इरिटेट ही जाउथिबे लॉस ऑफ मसल मास मसल तो रहिबो बट मसल रो मास ता कमी जिवो ता वेट ता कमी जिवो एडिमा हेले मते मसल मास रो वेट कमे चेंज इन द स्किन एंड हेयर कलर तापरे होची डायरिया डायरिया ऊपर भी थिला एटी भी डायरिया अछि नेक्स्ट माने डैमेज टू द इम्यून सिस्टम एटा भी थिला ऊपर लो इम्यूनिटी हमें पड़थिले ठीक अछि दिस मच इज रिक्वायर्ड हां आ गोटे होची स्वेल एंड बेली पेटटा फुली की थिबो BELL बेली राइट जेमती ऊपर मु कहली कि मारास्मस रो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स जोटा आपन को गोटे थरे बतेबो जे हां एटा मारास्मस ना पॉसियर कर तोटा सेठी वेस्टिंग थिला सेही टाइप रो पॉसियर कर रे एटा होची आपनकर एडिमा राइट क्लियर समझ एती पर्यंत ठीक अछि टिके गोटे थरा देखंतु ए जो चित्रटा देखिबे और टिके क्लियर हे जिवो जस्ट सी दिस एटा होची पॉसियर कर जोटा हमें सेकंड देखिले तो ए केस रे देखंतु छुआ को जदी आपण देखिबे आपण लागियो जे से बहुत माने ये अछि माने से भूखिला अछि बा से जो टाइप रो जोटी तार हाड़ देखा जाउची सेही टाइप रो कंडीशन नुह तो सेठी पा को हम वेस्टिंग को हुन किंतु ता पेट देखंतु फुलिक अछि तो स्वेलन बेली अछि एडिमा देह गुडा जो फुल्ला हले देखा जाउची एटा काहे की एबे भी ता देह रे एनर्जी नाही माने से जो प्रोटीन नाही किंतु से जो फ्लूइड एक्युमुलेट होची ता फल रे ए टाइप रो स्वेलन माने बॉडी मास देखा जाउची एंड स्वेलन बेली देखा जाउची बट दिस टाइप ऑफ डिजीज कंडीशंस इज कॉल्ड योर क्वेश्चन राइट नेक्स्ट see it is called marasmus marasmus रो मेन जिंस मु कोन कहितली
इट इज वेस्टिंग देखो से छुआर से माने देहरे ये जो हार्ड पोर्शन देखा वी कैन सी ओवर हियर दिस पोर्शन ओके ठीक अछि एकदम हाथ और गोड़ गुड़ा एकदम पूरा पतला पतला तो एटा को वेस्टिंग कोजन वेस्टिंग कंडीशन आई गेस आई एम क्लियर ठीक अछि जेतबेले नेक्स्ट जो गोटे डिजीज रहिला मारास्मेटिक क्वाशियरकर एटा मिक्स्ड कंडीशन बोथ माने मारास्मेटिक भी रहिबो और क्वाशियरकर भी रहिबो जोठी वेस्टिंग और इडिमा मु आपन कोन कहितली मारास्मस रे मेन थिला वेस्टिंग और क्वाशियरकर रे मेन थिला इडिमा तो एई दीटा को कंडीशन रो प्रोमिनेंट इफेक्ट देखा जो एट ए टाइम देन ओनली वी कैन से इट एज द मारास्मेटिक क्वाशियरकर समझते बुझी पारले एटा होची प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज क्वेश्चन ऑलरेडी आस्थिला इफ पॉसिबल ये क्वेश्चंस को एड्रेस करबे चेष्टा करिवे ठीक अछि बिफोर मूविंग आउट लेट अस डिस्कस टिके ए टॉपिक रे नथिले भी आपन को मालन्यूट्रिशन दरकार होबा और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पे दरकार कि प्रथमे बुझी जानतो व्हाट इज स्टंटिंग व्हाट इज वेस्टिंग एंड व्हाट इज अंडरवेट एनी आईडिया के कहि परिबे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेस्टिंग सर हला हाइट अनुसार वेट रो डिसिमिलरिटी वेरी गुड स्टंटिंग हला एज अनुसार ता हाइट ता नथिबो वेरी गुड और अंडरवेट तो नाही कहूची माने एज अनुसार आपन को वेट ता कम रहिबो ठीक अछि जो मानको डाउट अछि बा जानि नथिले किछ असुविधा नै आमे जानिया पे क्लास करछु मु भी बहुत लेट जानथिले विषय रे जस्ट राइट डाउन ओके स्टंटिंग कोन आपनकर एज अनुसार आपन हाइट कम स्टंटिंग सरला अंडरवेट कोन होची एज अनुसार वेट कम तो एज अनुसार हाइट कम हेले स्टंटिंग एज अनुसार वेट कम हेले आपनकर अंडरवेट आ गोटे रहिबो वेस्टिंग सेटा होची हाइट अनुसार वेट कम अछि am I clear okay हाँ just I want to add some data जो protein इसका लास्ट वन कौन कहले सर स्टंटिंग वेस्टिंग और लास्ट वन कौन कहले अंडरवेट ओके देखो स्टंटिंग होची हाइट कम in terms of your age wasting हो sorry underweight होची weight कम in terms of your age easy to remember type रो मु कहूची age comparison रे height कम हेले stunting कहूचू age comparison रे weight कम हेले underweight कहूचू आ जदी height comparison रे weight कम हेला then ही हमें ताको wasting कहूचू clear okay गोटे छोटो खाली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया किछि जिंसो कहूची हाउ यू आर सपोज टू इनकॉर्पोरेट योर डेटा माने जो आपनकर माने करंट अफेयर्स रे आपन जिंसो पढुचंती से जिंसो को आपन केमति इनकॉर्पोरेट करिवे आपनकर आंसर राइटिंग रे टू मेक इट मोर विजिबल एंड डिफरेंट एंड स्टैंड आउट फ्रॉम अदर आंसर राइटिंग जस्ट आई एम गिविंग यू एन पर्सपेक्टिव जदि चाहिबे डेटा लिखि परिए मु किछि डेटा कहूची एगुडा को ए गोटे सेट ऑफ 10-15 डेटा मु कहिबी ए 10-15 डेटा को आपण मल्टीवेरियस पॉइंट्स रे आपण पुट करबे ओके विथ योर जीएस विथ योर एटा आपण जो रहिला डिजीज कंडीशंस रे माल न्यूट्रिशन रे लॉट ऑफ एप्लीकेबिलिटीज आते ओके जस्ट आई एम गिविंग एन आइडिया बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर डेटा एंड it does not mean कि you add hundreds of data okay make it and confine to some 10-15 or 20-30 handy data so that you can use it at various type of applications जेमति कि गोटे जिंस हम कहूची वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP कौन कहितला as per the WFP data 135 million are suffering from the acute hunger माने acute hunger रू 135 millions are suffering okay जेतेबेले भी malnutrition related जिंस आछि प्रोटीन एनर्जी malnutrition आछि we can quote the data आयोडीन आ गोटे स्टडी कहूची जदि आयोडीन रो डेफिशिएंसी हबो ओके आयोडीन रो जदि डेफिशिएंसी होची देन हम जो IQ लेवल रहिला IQ लेवल will be reducing by 10
to 15 10 ରୁ 15 normal IQ যদি 100 to 110 ভিতরে রুহে বা 90 to 100 ভিতরে রুহে then it will reduce by 10 to 15 just because the deficiency of iodine. सिक्सटीन परसेंट वर्ल्ड जो पॉपुलेशन अच्छी से माने माइल्ड गॉइटर एक्सपीरियंस करछंती सर कौन कहले आप 16% रो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपीरियंसिंग माइल्ड गॉइटर GOITER गॉइटर गलगंड माने जानथियो जो आयोडीन टाटा नामक एडवर्टाइजमेंट ओके इंडिया रो थायराइड हां इंडिया रो 1/3 जो माल नरिश चिल्ड्रेन इंडिया रे अछंती माने टोटल पॉपुलेशन रो टोटल वर्ल्ड रो 1/3 जो माल नरिश चिल्ड्रेन यू कैन फाइंड इन इंडिया. And out of this 1/3 a bitaru half the children are under the age of 3 years. So that is the, you can say, penetration of malnutrition in Indian population. कहीं की कंडीशन जो भी ऊपर हमें पढ़िले कि इंडिया रो जो ए चिल्ड्रंस मानको जो malnutrition condition अछि why it is so, just because another data you can write India रो 23.6% of the Indian population पाखरे purchasing power is less than 92 rupees per day. Okay, 23.6% लिख ले. Indian population is less than 92 rupees per day. जदि हमें स्टंटिंग कथा देखिबा स्टंटिंग मो बर्तन आपन कोन कहतली व्हाट इज स्टंटिंग स्टंटिंग इज लेस हाइट फॉर द एज जदि स्टंटिंग होउची देन व्हाट इज हैपनिंग your productivity जे कोनसी लोक जदि स्टंटिंग एक्सपीरियंस करची ता प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग बाय 1.4%. 1.4% ऑफ प्रोडक्टिविटी ता कमी जी प्रोडक्टिविटी बुझी परछन तो होलिस्टिक वे रे कोन आपन सपोज नॉर्मल गोटे काम करिया को दिया हबो ओके से कामर अर्थ केवल फिजिकल काम नुह मेंटल काम मध्य जदि जन को नॉर्मल गोटे काम करिया को दिया हुए जदि जने स्टंटिंग कंडीशन को एक्सपीरियंस करूची तारो सेही पर्टिकुलर काम करियारो एफिशिएंसी जो अछि दैट विल रिड्यूस बाय 1.4%. तो देखो आम एति जो पढ़िले एति जो जिनसे डिस्कस कले 92 रुपीस रु कम होची 1/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रो जो भी माने हमर माल नरिश चिल्ड्रन रहिले इंडिया रे वन हाफ ऑफ द से चिल्ड्रन होचंती अंडर द एज ऑफ 3 एंड ऑल दिस थिंग्स ए सब पछरे ना आ गोटे सब बड़ जिंस कोन रहिची हमर एडमिनिस्ट्रेशंस बा जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रो गोटे बहुत बड़ पार्ट रहिची ताकू एग्जांपल दवा पई मिनिस्ट्री ऑफ माने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ओके WCD मिनिस्ट्री जो रहिला तार गोटे डेटा अछि ता डेटा कोन कहूची इंडिया रे 32.5% फंड अनयूटिलाइज रहुची को फंड जो फंड एलोकेट करा हेची पोषण अभियान पे पोषण अभियान कौन पे हिची जानथिबे समस्ते पीएम पोषण तो इवन द मिड डे मील्स आछे तो पोषण अभियान पे जते फंड एलोकेट करा होची आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट 1/3 32.5% funds are unutilized return ही जाउची. This is data from the WCD ministry. तो प्रथम पोषण अभियान विषय लिखले तो पोषण अभियान काहे के इंपोर्टेंट व्हाई यू आर डिस्कसिंग पोषण अभियान राइट नाउ. तो पोषण अभियान रो टारगेट कोन म आपन कहि दोची पोषण अभियान रो टारगेट होची स्टंटिंग को 2% कम करिवो यू राइट इट टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 2%. Undernutrition by 2%, reducement kochi, reducing stunting by 2%, undernutrition by 2%, low birth weight by 2%, and anemia by 3%. तो चारटा जिनस को कम करिवो, स्टंटिंग को कम करिवो, अंडरन्यूट्रिशन को कम करिवो,
लो बर्थ वेट जन्म हवा समय छुआर जो कम वेट रोचे ताकू कम करिवो ऑल द थ्री डेटाज आर 2% रे कम करिवो गोटे 3% कंडीशन अछि जोटा कि होची एनीमिया जो रक्तहीनता कहले आपण ओके ए पोर्शन अभियान रो जदी फंडिंग टिके देखि देबा जस्ट बिकॉज़ इफ एट ऑल यू आर राइटिंग इट इन जीएस ताको टोटल वर्ल्ड बैंक फंडिंग करूची सॉरी वर्ल्ड बैंक फंडिंग करूची 50% और 50% सेंटर स्टेट रो कंट्रीब्यूशन होची सपोज 1 करोड़ दिया हला 1 करोड़ रो 50 लाख तब वर्ल्ड बैंक एंड 50 लाख तब स्टेट और सेंटर मिसी की और से जो 50 लाख रहिला स्टेट और सेंटर देबे ता फंडिंग पैटर्न नॉर्मल स्टेट्स गुडा का भितरे 60-40 60% तब से 50 लाख रो सेंट्रल गवर्नमेंट 40% तब स्टेट गवर्नमेंट और हिमालयन स्टेट्स जो रहिची हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो रहिचंती से मानको पाई 90% तब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% तब स्टेट गवर्नमेंट so this is normal funding pattern if at all जेतबेले कोनोसी स्कीम्स रे देखुचंती आपण जेतबेले आपण करंट अफेयर्स पढिबे जोटी आपण लेखा हिथिबो कि फंडिंग पैटर्न 50% इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक दिस प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक ता अर्थ कोन ता अर्थ इज लाइक दिस दैट प्रोजेक्ट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक and rest of the 50% by the center state combinedly and in general center state or ratio empty thai 60 and 40 90 and 10 60-40 for all the states except Himalayan and northeastern states और Himalayan northeastern states में 90-10 रो सबले रेशियो थाए राइट हां आ गोटे इंपोर्टेंट डेटा केवल लिखंतो देन आई विल बी मूविंग सेटा होची ग्लोबल हंगर इंडेक्स रो यदि 2021 रो डेटा कहबी 2023 रो भी अछि 2023 रो इंडिया रो रैंकिंग होची 111 और 2021 रे इंडिया रो रैंक थिला 101 तो व्हाट इज हैपनिंग हमें 2021 रो 2023 को डेटा इंप्रूव न करके डेटा को डिक्रीज करिजे and that 111 India रो जो रैंकिंग अछि it is only out of 125 country and we are targeting to be a 5 trillion again टिके year out rank हां कहूची ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे 2021 रे इंडिया रो रैंक थिला 101 101 and 2023 रे इंडिया रो रैंक थिला 111 and this ranking is out of 125 countries only जो 101 कथा मु कहली तारो टिके बाइफर्केशन देखंतु से भितरे बाइफर्केशन केमती आमा जो से केमती रैंकिंग को से जो देइथिले माने केमती रैंकिंग को से माने प्रोवाइड करथिले अंडर नरिशमेंट जदि गोटे कंट्री रे अंडर नरिशमेंट अछि देन ताको 14% से अंडर नरिशमेंट ता 14% रैंकिंग रो डिटरमाइन करिवो वेस्टिंग 17% डिटरमाइन करिवो स्टंटिंग 35% करिवो और मोर्टालिटी रेट 3.7% करिवो लिखिया चाहू तो डाकी देबी अंडर नरिशमेंट माने आपण ठीक भाबरे खाइबा मिलुनी अंडर नरिशमेंट दैट इज 14% नेक्स्ट होची वेस्टिंग इज 17% next is the stunting is 35% and mortality is 3.7%. other than that our component thila these are the four basic and major component that is correlating with respect to our जो भी हमरो malnourishment related aspects रहिछि बाकी funding से mortality केते कहले 3.7% these are the four important parameters जोटा कि माने कॉन्स्टिट्यूट करूची ग्लोबल हंगर इंडेक्स जोठी इंडिया रो रैंक 101 2021 मसिया थिला और 2023 मसिया रे ता फर्दर डिटोरिएट करी कि 111 पहुंची क्लियर आई थिंक ए जो डेटा गुडा हम बर्तमान डिस्कस करले ए डेटा को जेतोला आपण मु कहिया कथा एथि पे बिकॉज़ आपण को लागुतो जे मो बहुत अर्ली स्टेज रे और भी अछि गुडा डेटा आई विल बी शेयरिंग विथ यू इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ए डेटा मो एथि पे दोची जेतोला ए पर्टिकुलर टॉपिक सरीबो आपण आंसर लिखिया को चेष्टा करिवे देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस डेटा आई एम नॉट आस्किंग यू टू मु कोनसी रिजिड बाउंड्री रखिया को चाहूनी जे ए डेटा को एथि पुट करिवे ए डेटा को एथि पुट करिवे यू हैव दिस टाइप ऑफ डेटा
and what I am trying to inculcate inside you is that आपण current affairs पढुचंती, keep your brain in that way open so that whenever you are encountering any data you can correlate it into the home science. In general home science is considered to be such subject जोठी current affairs रो correlations बेसी आसे नहीं. No, this is completely wrong. There are a lot of things that you can correlate into the home science itself. तो एई वे रे आपण लिखिया को चेष्टा करी जेतले आंसर राइटिंग को आपण प्रैक्टिस करिवे यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस डेटा. ओके, कोठी आपण पक्की परिवे को टाइप रे आपण बेटर शो कर परिवे विथ ए वेरी गुड रीजनिंग स्टाइल, राइट. नेक्स्ट कमिंग टू द लिपिड्स. लिपिड्स को मैं फैट कहूछु. ओके, सी लिपिड्स इंक्लूड फैट ही पारे, ऑयल ही पारे बा फैट लाइक अदर किछि सब्सटेंसेस ही पारे. फैट कोटी लिपिड्स केमती तयारी हेची जेमते हमें प्रोटीन कहिले अमीनो एसिड रु तयारी हेची सेमिति लिपिड्स तयारी हेची फैटी एसिड रु एंड ग्लाइसरॉल रु. ग्लाइसरॉल औ फैटी एसिड ए दुटार कॉम्बिनेशन रे हेची लिपिड्स तयारी हेची. आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कोन जेमते हमें प्रोटीन रे देखिले कि से कार्बन थिला, हाइड्रोजन थिला, ऑक्सीजन थिला, ताकू छाडिया परे यू गॉट योर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. लाइक तो एक केस रे you will get the carbon, you get the hydrogen and you get the oxygen. ठीक अछि. Now lipids जो जति हमें classifications देखिबा, classifications can be saturated and unsaturated. ए saturated बा unsaturated केमती डिफाइन करिबा हमें देखिबा जे सेही भितरे केते हाइड्रोजन एटम अछि. So number of hydrogen atom that is attached to a carbon, to each carbon atom, that determines which type of माने को टाइप रो से amino fatty acid हबो. Saturated हबो ना unsaturated हबो. Saturated केते बळे हुए जदी दीटा हाइड्रोजन एटम गोटे कार्बन एटम सहित अटैच हेचिवो. जे दीटा हाइड्रोजन गोटे कार्बन एटम सहित जदी अटैच हेतिवो गोटे साइड रे आ गोटे साइड रे आ दीटा कार्बन एटम अटैच हेतिवो. जस्ट माने विजुअलाइज करंतु. आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट इन थिंग. empty carbon atom rohila, this is your carbon atom first. If it is a hydrogen, here it is a hydrogen, this is a carbon and this is a carbon. A type ro jodi structure hochi it is called the saturated. Unsaturated kete hue a case re this side you will get the carbon. हाँ, organic chemistry भितर केते चिपानी just मु कहूनी ए कोनसी एक्शंस रिएक्शंस आपन लिखिया दरकार कहि कि जस्ट रिमेंबर जस्ट आपन अंडरस्टैंडिंग पाई. ओके, गोटे विजुअलाइजेशंस केवल दोची एंड विथ ए डबल बॉन्ड हियर इट इज वन हाइड्रोजन एटम. तो सिंपल कथा एटा होची सैचुरेटेड, दिस इज योर सैचुरेटेड एंड दिस इज योर अनसैचुरेटेड. ओके, सिंपल कथा कोन कहली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन एटम. हियर इन केस ऑफ सैचुरेटेड there are two hydrogen atom attached to a single carbon atom. One side outside रे तीटा को कार्बन एटम रहउची दरकार नै हमको. तो ए केस रे दीटा हाइड्रोजन एटम अटैच हला बडकू ए केस रे गोटे हाइड्रोजन एटम अटैच होची. ओके, इन दिस वे द क्लासिफिकेशन इज सेग्रीगेटेड whether it is saturated or unsaturated. ए जिंसटा एटी लेखा हिची, यू कैन गो बाय दिस. तो सैचुरेटेड हमको सेहिटर दरकार दे जस्ट हमको टेक्स्ट रे लिखिबार अछि, हमको ए कोनसी इक्वेशंस देखिबार नै. मन केमती रहबे सेठी आपण कहले केवल दैट्स ऑल. हां, हियर इट इज टू हाइड्रोजन एटम, हियर इट इज गोटे हाइड्रोजन का देयर इज ए मिसिंग, देयर इज वन हाइड्रोजन एटम इज मिसिंग. सेठी पई से साइड रे से कोन करे गोटे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करथा है. दैट्स ऑल. ओके, सॉरी वन सेकंड. राइट, तो दैट्स ऑल. आमे जे देखिबा सैचुरेटेड हां जदि सैचुरेटेड फैटी एसिड कथा देखिबा तो एग्जांपल्स आर कोकोनट एंड एनिमल फैट्स. ठीक अछि, दिस इज ऑल. दिस इज फॉर द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मोर देन दैट यू डोंट नीड. हां, बर्तन देखिबा जदि आमे बर्तन क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स बेस्ड ऑन द एटा गोटे क्लासिफिकेशन गला सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. अदर देन दैट आउ कोन कहि परिबा हमें लिपिड्स को बा फैट को फर्दर हमें डिवाइड करछु. सिंपल फैट्स, देयर आर कंपाउंड फैट्स, देयर आर डिराइव्ड फैट्स.
simple fats kaha ko ame kahuchu, which are the simple fats? The simple fats are normal ester, normal products of kahar glycerol of fatty acid. So ame kahile glycerol of fatty acid hi basic building block ja phalore fats tiari hi chanti एटी ताकू मिसी के simple lipids जदी formation हुए then ताकू हमें simple lipids कहूछु. Okay, these are the ester of glycerol and fatty acid. Okay, examples कोन जे कोनसी प्रकार oil जे कोनसी प्रकार fat हमें जोटा देखुछु that is called the simple lipids. तापरे compound lipids कोन हबो? Compound lipids are ester of the say glycerol and fatty acid with the substitutions of other component. जेमति की माने एबे सपोज एबे कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोरिक एसिड जो ए जो कंपोनेंट देखंतु ए केस रे कोन हला साधारण ए दीटा फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिसी गले केवल कोनोसी प्रकार सेमानो भितरे कंपाउंड रिएक्शन हेनी जे मिसिया फल रे कोनोसी कार्बन बाहरी गला बा से भितर ऑक्सीजन बाहरी गला बा से भितर वाटर बाहरी गला सेमति किछि हेनी साधारण नॉर्मली केवल अटैच हेइ जति किंतु ए दीटा अटैच हवा फल रे किछि प्रकार कंपोनेंट जदी रिलीज हेउची एलिमिनेट हेउची सेमानो भितरु ओके सब्स्टिट्यूट होउची then से केस रे हमें ताको कोन करिबा कंपाउंड लिपिड्स कहबा. कंपाउंड लिपिड्स केबे इंडिपेंडेंट न थाए से कोन करे कार्बोहाइड्रेट सहित मिसी कि थिबो फास्फोरिक एसिड सहित मिसी कि थिबो तो सेही भितरु परवर्ती समय रे परे हम फैट को डिराइव करिया को पड़े. ओके सिंपल लिपिड्स गुडा को इंडिविजुअली एग्जिस्ट करंती कंपाउंड लिपिड्स गुडा को अन्य कंपोनेंट सहित मिसी कि थांती. नेक्स्ट इज डिराइव्ड लिपिड्स. डिराइव्ड लिपिड्स बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे कन्वर्ट हे जाय एगुडा डिराइव करे सिंपल आउ कंपाउंड ए दीटा को जो बर्तमान देखिले सिंपल एटी हमें देखिले सिंपल लिपिड्स एटी देखिले हमें कंपाउंड लिपिड्स ए दीटा कर मिश्रण फल रे किछि कॉम्प्लेक्स टाइप रो जिंसो ही फॉर्मेशन हे जाय. दैट इज इन द एग्जांपल देखंती कोलेस्ट्रॉल मैं कोन कहूछु कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर द हेल्थ जस्ट बिकॉज़ इट इज टू कॉम्प्लेक्स. ता नॉर्मल तारो हाइड्रोलिसिस हबोनी तारो नॉर्मल प्रोसेस रे से डिसॉल्व हबोनी नॉर्मल प्रोसेस रे ताटू एनर्जी एक्सट्रैक्ट करा जाय परिबो नाही. सो दैट्स व्हाई दिस डिराइव्ड लिपिड्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ. ओके तो फंक्शंस ऑफ द लिपिड्स यदि हमें फंक्शंस देखिबा नॉर्मल सा फंक्शंस अछि जेमिति की एनर्जी भी प्रोड्यूस करे किते एनर्जी बाहर सब तो हाईएस्ट एनर्जी बाहर 1 ग्राम ऑफ फैट को यदि हमें हाइड्रोलाइज्ड करूछु देन इट कैन प्रोड्यूस 9.3 kcal ऑफ एनर्जी माने किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. किछि प्रकार फैट सॉल्युबल सॉरी जो विटामिन्स अछन जेमिति की ए डी ई के विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के ए विटामिन्स गुडा को सॉल्युबल हेबे केवल फैट थ्रू रे यदि सॉल्युबल हेबे नी माने जदि हम देह रे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स नाही देन ए विटामिन्स अन्य ऑर्गन्स को कैरी ही परिबो नाही बिकॉज़ वाटर रे से माने मिसंती नाही. ओके नेक्स्ट जेम जेम प्रोटीन रे पढिथिले कि प्रोटीन सॉरी कार्बोहाइड्रेट रे पढिथिले प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन सिमिलरली फैट मध्ये प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करि परिबो. यदि फैट ता एनर्जी प्रोवाइड करूची बॉडी को देन प्रोटीन इज स्पेयर्ड आउट प्रोटीन इज लेफ्ट आउट फॉर द बॉडी बिल्डिंग फंक्शन. Next, fat contains essential acids which helps in the form the जो components of the cell membrane and cell tissue. Cell membrane और cell tissue रो formation करिया पे मध्य help करे. Next, एक fat गुडा कौन हुए adipose tissue रे हम जो muscle tissues अच्छी सेठी जमा हुए और जमा है कि कौन प्रोवाइड करे हम देह को गोटे टाइप रो इंसुलेशन प्रोवाइड करे. ओके जो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस ताको इंसुलेट करे. आपण सुनिथिबे मोटा लोक हो गले टिके ताको माने टिके कम ठंडा लागे हमें कोना बेसी चर्बी ही जे जरो तो इट्स लाइक दैट वी नीड टू से लाइक दैट बट व्हाटएवर वी आर सेइंग अननोइंगली आल्सो दैट इज राइट दिस इज द रीजन. ओके ये प्रोटेक्ट भी करे टिश्यूज को प्रोटेक्ट मध्ये करे एई प्रकार फैट जमा हवा फल रे सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करिया पे मध्ये फैट रो आवश्यकता अछि. आ फैट ता जनरली जो डाइजेशन होची इट इज स्लो डाइजेशन. ओके स्लो डाइजेशन हवा फल रे फैट कोन हो कि हम जो स्टार्वेशन जते आपण राइस कंज्यूम कर दोचने राइस इमीडिएटली हम तो हेवी फील हे जाय बट मे बी आफ्टर 3 आवर्स और 4 आवर्स विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री अगेन. व्हाई इट इज जस्ट बिकॉज़ कि फास्ट डाइजेशन हुई बट ता प्लेस ता जगह जो फैट माने जो हमर माने कोनसी फैट जिंस जदी हमें खाइथिबा देन इट टेक्स लिटिल मोर टाइम टू डाइजेस्ट हाइड्रोलाइज कंप्लीटली. एंड वन मोर थिंग द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट इज लेस कंपेयर्ड टू द माने फैट रे डबल रु अधिक एनर्जी पाउची कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट. ओके नेक्स्ट ये गोटे फ्लेवर मध्ये प्रोवाइड करे बा पैलेटेबिलिटी प्रोवाइड करे टू आवर माउथ सेति पे हमें तेल सबरे पके दोचु राइट. सोर्सेस कोन देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस वन इज अ विजिबल सोर्स अनदर इज अ इनविजिबल सोर्स. विजिबल सोर्स कोन नॉर्मल हमें घियो लगे खाइ दोचे बटर लगे खाइले तेलो यूज कले कोनसी प्रकार रोसी करिवारे सेटा को विजिबल सोर्स कहउछु.
इनविजिबल सोर्स कौन आमे कहूँ ना ए पर्टिकुलर जिनस ए खाद्यटा खाओनी ये फैट अच्छी तार तो कौन एग हो बीट हो कौन सी माने मिल्क हो ये टाइप जो खाद्य रहा the fat is not completely visible. It is while eating something you won't feel oily things and all, but say bhitar fat hai. Okay, so that is called the invisible type of fat. Both are the adequate sources of your fat. Okay, with the deficiency of the fat, यदि fat आम देहरे कम हुए, then what will happen? प्रथमे growth cessation हबो, growth टा restrict हे जिवो, cease हे जिवो, growth हबो नहीं. Next, it results into the flaky skin. मॉइस्चराइजेशन करछन तो समझते स्किन को काहे करछु बिकॉज़ जतबेले हम शीत दिले जतबेले फैट रो टिके अभाव हे जाय तो सेतबेले कोन हुए कि स्किन ता मोर ड्राई हे जाय सो एक्सटर्नली वी अप्लाई ऑल सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर्स एंड बॉडी सॉप टाइप ऑफ कंपनी को धली करछु हमें ठीक अछि नेक्स्ट तो द कॉमन डिसऑर्डर्स जदी हमें देखु जे ए जदी आउ कोन देखा जे गोटे टोड स्किन्स पे आ गोटे अछि पायरोडर्मिया हुए एई गुडा को मध्ये डिजीज कंडीशंस जोटा माने फैट रो डेफिशिएंसी रे चिल्ड्रंस मानको पाखरे देखा जाय एंड दीस डिजीज कंडीशंस आर नॉट दैट ग्रेट टू बी read in detail. Okay, protein energy malnutrition related to kwashiorkor and marasmus, those were important, so that's why we read it in breadth and width. Okay, ठीक अछि समस्ते एती पर्यंत बुझी पारले whatever we have studied for now just go through that आउथरे काली हमें ए टाइम रे ही आउथरे क्लास करी I don't want to make the class too long so that you will not be able to माने इनिशियल डेज रे डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सब ओके बट